Okay, so question 10, first part, page number 397. The question is I is equals to integral 1 upon x into x raised to power n plus 1 dx. So the hint for this question was you have to multiply x raised to power n minus 1 in numerator as well as in denominator. Then the two terms of denominator, this x and this x raised to power n minus 1, so the power will be added for these two terms and you will get x raised to power n into x raised to power n plus 1. जहां पर भी समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक है? ये यहां तक का स्टेप आई थिंक क्लियर हो गया होगा. So this will be the first step. Now further, what we will do, we will apply substitution. We will substitute x raised to power n is equals to t. Because its derivative is in numerator. That's why we have substituted this term as t. Differentiate. So n x raised to power n minus 1 is equal to dt by dx. Further, you will get x raised to power n minus 1 dx is equals to dt upon n. Now apply the substitution. So this term will become dt upon n. So it is dt upon n, whereas in denominator this term will be replaced with t and this term now will become t plus 1. Here n is constant, so we can take outside the integral. So it will be 1 upon n integration 1 upon t into t plus 1 dt. Now we will apply partial fraction here. So how we can apply partial fraction? What we can do is we can write 1 upon n, this integral as a upon t plus b upon t plus 1, like this. Okay, a upon t, let us write it as a upon t dt. A upon t dt and integration b upon t plus 1 dt, like this. Okay. Now we have to find the values of a and b. For that, we will do the partial fraction here. 1 upon t into t plus 1. We can write it as a upon t plus b upon t plus 1. Further, we will take LCM. So the LCM of these two terms now it will be t into t plus 1. Whereas in numerator, it will be a into t plus 1 plus b into t. Okay. अब ये दोनों Yes. टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी. A into t plus 1 plus bt. Now we will put t is equals to minus 1 and you will get the value of b. If you put t is equal to minus 1, you will get b is equals to minus 1. You can check this. Now put t is equals to 0, you will get a. The value of a will be 1 in this case. You can check this. Now put the values of a and b here. Just a second. So this was the partial fraction we had applied, and let's shift this partial fraction here. Okay. Now further, we will put the values of a and b here. So it will be 1 upon n integration a, that is 1 upon t dt, plus b, that is minus 1. So we will directly write it as minus integration 1 upon t plus 1 dt. Okay. Further integrate this. So 1 upon n, the integration of t will be log t minus integration of this term will be log t plus 1. Now apply the property of log a minus log b. So it will be log a by b. So you will get 1 upon n log t upon t plus 1. Now at the end, put the value of t and that will be your final answer. Is it clear, Shavi, now? Yes, sir. Understood. Okay. Next doubt question from the homework. Homework here, yeah? Okay. सेकंड का सेकंड. ओके, सेकंड का सेकंड मैं बता देता हूँ.
सेकंड का सेकंड पार्ट चेकआउट करना. आई थिंक ये नहीं बनाया होगा किसी ने. शैवी, हैव यू सॉल्व दिस पार्ट? Sir, actually, I was also going to say the same because I have solved this, but at the end, I'm getting the answer wrong. Okay. Tell me how you have started with this question. Have you directly applied partial fraction in this question? Factorization. Look, Sir, I have divided it. yes, actually we have two options. First one, we can divide this question. We can divide the numerator by denominator. Okay. And the another approach, which is I think better than the first one. Okay, that is we will make the numerator in the form of denominator. How we can do so? Just look at this question. What we will do, in numerator we have x square plus 1. So just write x square and plus 1 here. Okay. Whereas in denominator we have x square minus 5x plus 6. Now, if we have this part in our numerator, then we can separate the numerator and then we can separate the complete fraction in two parts. Okay, so what we need in numerator is minus 5x plus 6. So let's write minus 5x plus 6 here. And if we are additionally writing this term here, then we have to manage to cancel the terms. So yes, what we will do, we will write plus 5x and minus 6 also, so that all the terms will be cancelled out and you will get the same term which is in earlier in question. Okay. Sir, can we do midterm splitting also in the denominator? Yes, we can do the middle term splitting approach, but as of now, by splitting the middle term, we cannot simplify the numerator and denominator. Maybe in some question it is possible that they gets cancelled when we get the factor of denominator. But here it is not possible because numerator we cannot factorize. ठीक है? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्योंकि नीचे की डिग्री और ऊपर की डिग्री सेम है, तब सीधे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता. बाकी क्वेश्चन में न्यूमरेटर की डिग्री जो है ना वो डिनोमिनेटर से छोटी हुआ करती थी. तो पार्शियल फ्रैक्शन का सिंपल नोट पॉइंट है कब हम अप्लाई कर सकते हैं, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी हो. ठीक है. So, like after midterm splitting, we'll get x minus 3 and x minus 2. So, like we can take it as a and b, and later on the denominator can get cancelled, and then we can put the value of x like 1, 0 to get the value of a and b. Just wait, Chevy. What you are saying here, it is x square plus 1 upon, you are getting a factor x minus 2 and x minus 3. Now, what is your doubt after this? So, like now we can take a plus b in that way. A plus b. No, sir, like a upon x minus 2 and b upon x minus 3. This is what I am saying. We cannot write like this in this question. Why we cannot do so? Because the degree of numerator is 2. Yes, sir. Also the degree of denominator is 2. So the condition for partial fraction to apply this method is that the degree of numerator should be smaller than the degree of denominator. Then only we can apply this approach. Okay. However, we are going to apply this factorization middle term splitting, but after a few steps we will do this. Okay. Yes, sir. Okay. So the first step we have done this. Okay. Now we will separate the this complete integral in two parts. The first part will be this numerator upon denominator and this numerator upon denominator. So here it will be x square minus 5x plus 6 whole upon denominator, that is x square minus 5x plus 6. And the rest of the term will become plus this 1 and minus 6, it will become minus 5. So we will get 5x minus 5 divided by the complete denominator part, that is x square minus 5x plus 6. Is it clear to all of you? ये Yes, इसको ऐसा ब्रैकेट में लिख देते हैं और ये इंटीग्रल लगा देते हैं. ठीक है. कंप्लीट इंटीग्रल है अभी. अब ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो गई. ये क्या बन गया? 1 बन गया. तो अब आपके पास क्या बच गया? इंटीग्रेशन 1 dx. अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहा हूं.
प्लस इंटीग्रेशन ये वाला पार्ट, मतलब कि 5x, ये 5 है ना, 5x नहीं है, 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। यहां तक क्लियर सबको? Sir, how did you get 5x when we have, like, when we cancelled it? When we had, So we got x square minus 5x and on the other side we have plus 5x. So look, like it will get cancelled, no there. look here, earlier we have x square plus 1 in our numerator. What we did is we had added this term in the numerator, minus 5x plus 6. So to balance the equation or function, we have to write this term also, plus 5x minus 6. Is this part clear to you? Yes, sir. Okay. Further, what we have done, we had separated the two terms, like this upon denominator plus this upon denominator. Is it clear? Yeah, yes, sir, understood now. Okay. Okay. Further, the integration of this part will be x directly, plus we can take 5 outside the integral and we can write it as x minus 1 divided by the denominator. Further, we can factorize and the factors will be x minus 2 and x minus 3 by applying the middle term. Okay. Now, after this, what we will do is we will apply the partial fraction here. So for partial fraction, now we can apply partial fraction. So for partial fraction, x minus 1 divided by x minus 2 into x minus 3. So the partial fraction will be a upon x minus 2 plus b upon x minus 3, like this. Now, here it will be x minus 2, x minus 3, and the right hand side will be x minus 2, x minus 3, a into x minus 3 plus b into x minus 2. Denominator cancel out हो जाएगा. You will get x minus 1 is equals to a into x minus 3 plus b into x minus 2. ठीक है? अब x की वैल्यू पुट करो. पुट x is equals to 3. 3 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 is equals to क्या होगा? b2 आएगा. ठीक है, वेरी गुड. अब पुट करो x is equals to 2. x is equals to 2 पुट करोगे तो a की वैल्यू आएगी 1. चेक करो अच्छे से. -1 आएगा कि +1 आएगा? -1. -1 ना, ठीक है. हाँ, okay. So now we can write it as x plus 5 integration a, means -1 upon x minus 2 plus b, that is 1 upon x minus 3 dx. Is it clear? ठीक है. Further integrate and x plus 5, it will be minus log x minus 2 plus log x minus 3. Further, you can apply the property of log and the answer will be log x minus 3 upon x minus 2 plus c. That will be your final answer. Clear सबको? Okay. हटा दो इस क्वेश्चन को तो बताओ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं. और कौन सा क्वेश्चन मैंने बोला था जो मैं बताऊंगा? थर्ड का फर्स्ट और सेकंड. ये एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए, मेक श्योर कर लेना. ठीक है. इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 divided by x square minus 1. Okay. So in this particular question, we cannot do that process which we have done in the previous question. We cannot apply partial fraction directly here.
because So the let's divide it, no? yes, for this question we have the only option to divide the numerator with x square minus 1. So we will apply long division method, x square plus x plus 1 with, and the divisor will be x square minus 1. So the first term of quotient will be x. So we will get x cube minus x here. Okay. Now the sign of this will changed. It will be negative, it will be positive. We can cancel this and it will be 2x plus 1. That's it. That's it. The division will be stopped now because now the quotient, now the remainder has a degree 1 and the divisor has degree 2. So whenever the degree of remainder is less than the degree of divisor, then you stop the process of division. Now, how we can write this complete expression? So x cube plus x plus 1 divided by x square minus 1. So it can be written as quotient. So what is our quotient? Quotient is x plus remainder, that is 2x plus 1 divided by divisor, that is x square minus 1. So this is how we write quotient plus remainder upon divisor. Okay. So same thing will be, can be written here also. So x plus 2x plus 1 divided by x square minus 1 dx. Okay. Now the integral of this x will be x square upon 2 plus integration 2x plus 1 divided by this x square plus minus 1 can be written like this, x plus 1 into x minus 1 dx. Now what you can do here is you can apply partial fraction for this term, this part, and it can be written as a upon x plus 1 plus b upon x minus 1 like this, and you can find the value of a and b and further you can solve. आगे हो जाएगा तो मैं छोड़ दूं? Yes, sir. Okay. So let's move to the next part of this question. Second part of question 3. हटा दो इसको ना. For second part, x cube plus 1 divided by x cube minus x. X cube minus x है ना? X cube minus x. Again, we are facing the same problem. The degree of numerator and denominator both are same. So again, we have two options. First is to we can divide like which we have done in previous part, or the other option is we can make numerator and denominator same by adding some term in numerator. So yes, the other one is better in this case. So we can do minus x here and plus x here. Okay, is it clear? So, like, how do we come to know that what values we will be adding or subtracting in the question? Look, how we can come to know that which value we can add. We have x cube in numerator and denominator. Okay, and we Yes, sir. want to make this term x cube minus x in numerator. So obviously this minus x needs to be added here, and to cancel this minus x we have to write plus x also. So what we are trying to do is whatever is in numerator, we are trying to create the same term in whatever in denominator, we are trying to create same thing in numerator also. Okay. So by doing this, what we can do, we can separate the we can separate it in two parts, like x cube minus x upon x cube minus x plus x plus 1 upon x cube minus x, like this. Is it clear, Shavi? Yes, sir. By doing this two terms gets cancelled out and you will get 1 here, and whereas the for the other part 1 dx, for the other part what we can do here, we can take x common from denominator, we will get x square minus 1 here. Further we can also factorize this denominator part. We can write it as x minus 1 into x plus 1 also. Is it clear? And then this x plus 1 and this x plus 1 all will also be get cancelled out. Okay, here the integral of 1 will be x, so x plus, here you will get 1 upon x into x plus 1, x, it is x minus 1 na? X minus 1 dx. यहाँ तक clear हो रहा है ना?
And finally, what we can do, we can apply partial fraction. We can write a upon x plus b upon x minus 1 here. And after finding the value of a and b, we can integrate and get the answer of this expression. Is it clear? Yes, sir. Okay. नैना बन रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके और कौन सा क्वेश्चन था? सिक्स्थ का सेकंड भी बोला था ना मैंने, बताऊंगा। हटा दो क्या इसको अभी? सिक्स का सेकंड, सिक्स का जो सेकंड पार्ट है वो है इंटीग्रल 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। चेक करो सही लिखा है ना क्वेश्चन मैंने? ओके सो देखो, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन में मेंशन तो करेगा नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना है, इससे बनाना है, उससे बनाना है, ठीक है? लेकिन आपको पता कैसे चलता है कि किसी क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा? आपको पता तब चलता है जब आपको दिखता है कि हाँ डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है, लीनियर फैक्टर है या क्वाड्रेटिक फैक्टर है। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहला काम ये है कि ये जो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये है, इसको फैक्टराइज कैसे किया जा सकता है? तो हम पेयर बनाते हैं। फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया। फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? एक्स स्क्वायर। क्या बच जाएगा? एक्स माइनस 1। सेकेंड पेयर से माइनस 1 कॉमन निकाल लो, हाँ x minus 1 बचेगा। Further we can take x minus 1 outside and we will get x square minus 1 like this। हाँ उसके बाद आप चाहो तो यहीं पर पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाओ। इसमें एक्चुअली दोनों फॉर्म्स अप्लाई होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो फॉर्म है, अगर मान लो आप इसको ऐसा लिखते हो, इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ऐसा भी लिख सकते हो। दूसरा जो फॉर्म है वो क्या है मैं बता रहा हूँ, समझो। 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय +1, no? what, can you So repeat? like, no, Your sir. Actually, I have written x square minus 1 again in the form of x minus 1 and x plus 1. yes, I'm doing that in just right now. Okay, the first we can write like this. If we are writing like this, then what will be our approach and what form of partial fraction will be applied here? So the partial fraction that will be applied here will be a upon x minus 1 plus bx plus c divided by x square minus 1. So this partial fraction approach will be applied in this case. Okay, now another thing, नहीं होगा, रुको मैं कर रहा हूं, बोलने दोगे? Now another way is what we can do, we can apply a square minus b square here. So it will be a plus b into a minus b. Is it clear? X plus 1 into x minus 1. So this x minus 1 and x minus 1, now it will become x minus 1 whole square. And here it is x plus 1. Is it clear? So we can write the denominator like this also, x plus 1 x minus 1 whole square. Now which form can be applied here if you have this term in denominator? We apply a upon x plus 1, the first part, plus b upon x minus 1, this part, plus c upon x minus 1 whole square, this part. So this approach will be applied in this case. We have seen this type of partial fraction in yesterday's class. याद है ना? Okay, Chevy, now any doubt after this? Like the above one equation a upon x minus 1, that one, can we solve it with that way, or the second one will be more easier to solve? I think this will be better. This approach will be better or easy, we can say. Maybe both the approach will take same time here. Okay. Yes, sir.
So further, all of you can solve this question, or any explanation is required further? Can we move to the next question? Yes, Now, sir. any other doubts, Chevy, from this page, specifically page 397? No, sir, I have done. The second part of question 11, have you done that? The last Yes. question from this page. Okay. हटा दो ना रिया. हटा दूं? Now let's begin with the question number 12, first part. Anyone had solved this question? No. 1 upon, Sir, I have done this one. okay, this one is quite So it easy. is the direct formula. Yes, we can just write it as x plus 4 into x minus 4 and apply the partial fraction. Oh, okay. Also, the direct formula is available for this. We need not to solve it in this way. Yes, yes. वो डायरेक्ट फॉर्मूला वहां पर जो लिखा हुआ था ना, कहाँ पर लिखा हुआ था, पेज नंबर, 395. हाँ 395 में डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा 395 में. 1/2a log x माइनस ए अपॉन log x प्लस ए. ठीक है. 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए. दैट्स इट. ये हो गया आंसर. हाँ ठीक है. कुछ डाउट है रिया? फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में भी डायरेक्ट लग जाएगा, 13th में भी हो जाएगा. बाकी सब एज इट इज है. 14th क्वेश्चन बस एक बार देखना पड़ेगा कैसे बनेगा 14th क्वेश्चन. फोर्टींथ पार्ट बताओ कैसे बनेगा. हैव यू सॉल्व्ड शेवी 14th क्वेश्चन? Sir, which part? फर्स्ट पार्ट. Yes, sir. ओके. So here also like we can break the denominator 2x whole square and 3 square in that way. ओके 2x होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. further what you have done after this? So then again like we can apply partial fraction here as it is a square minus b square. No, we cannot apply partial fraction here right now. Why? What is the reason? Sir, because we have x square in the numerator. Yes, because the degree of numerator is same as the degree of denominator, so we cannot apply partial fraction here. So what we can do for this? What we can do is we have two options. First, we can divide the numerator by this 4x square minus 9. Second, we can recreate the denominator in numerator also. These are the two steps. So let me explain you the second one. So in denominator, we have 4x square. So let's write 1/4 integration 4x square divided by 4x square minus 9. Is it clear to all of you? The next step will be 1/4 will be as it is. Here integration 4x square. Now we will write minus 9 plus 9. Why we are doing so? Because in denominator we have 4x square minus 9 with us. So that's why we had done this. Is it clear? Now it will be 1/4 under bracket integration 4x square minus 9 upon 4x square minus 9 dx plus 9 integration 1/4x square. कहाँ? क्या? 1/4 नहीं निकाला हमने 4 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया.
अगर तुम उस वैसा करना चाह रहे हो, 4 कॉमन निकालना चाह रहे हो, वैसा भी कर सकते हो। अगर वैसा करोगे ना तो ये 4 इधर से कॉमन निकलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 ऐसा आ जाएगा। उस अप्रोच को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, या ये भी कर सकते हो जैसा कंफर्टेबल हो। तो ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। यू विल गेट 1/4 अंडर ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 9 एज इट इज होगा। अब यहां से 4 कॉमन निकाल लो तो 1 ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 dx। समझ में आया ये? अब इसके बाद ये 1/4 एज इट इज, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, x प्लस 9/4। ये वाला जो 9/4 है, एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3/2 का होल स्क्वायर, यही मतलब हुआ। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, यही होता है। फर्दर सिंप्लीफाई कर लो जितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा x/4 प्लस, यहाँ 3 3 9 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, 3/16 आ जाएगा लॉग। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x माइनस 3/2x प्लस 3 ये आ जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। कुछ डाउट तो पूछ लो इसमें। लास्ट क्वेश्चन देख लो, 14th का सेकेंड पार्ट, बताओ उसमें कोई डाउट है तो क्या अप्रोच यूज होगी? हटा दो ना इसको। हटा दो, अच्छा है, ओके। 14 का सेकेंड पार्ट बताओ कैसे बनेगा? नहीं, हाँ कर सकते हैं, डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, सही बोल रहे हो, लेकिन उसमें क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। जैसा तुम लोग बोल रहे हो ना, मतलब जो अप्रोच तुम बोल रही हो रिया, उसके हिसाब से इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, ऐसे ही बोल रहे हो ना। फिर उसके बाद आगे हम क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ऐसा लिखेंगे, यही बोल रहे हो। फिर उसके जब हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी अपॉन सॉरी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस डी अपॉन एक्स माइनस 1 ऐसा होगा। समझ में? बहुत बड़ा हो जाएगा सॉल्यूशन, प्रॉब्लम ये Sir, क्योंकि हाँ, what if we multiply x cube? नहीं उससे नहीं होगा बेनिफिट नैना, क्योंकि एक्स क्यूब तब मल्टीप्लाई करना बेटर होता अगर ये वाला एक्स डिनोमिनेटर में होता तब, ठीक है। In that case, we will get x cube in numerator and x raised to power 4 in denominator. So all the term in denominator will be x raised to power 4. Then we can apply substitution. Okay, so the best approach for this question will be, what we can do, we can write x dx upon the denominator will be x square whole square minus 1 dx. Is this step clear to you? What I have done is I have written this x raised to power in this form. Sorry, ये dx नहीं है, ठीक है। Now we can apply substitution. So what we can substitute as t? Yes, x square can be replaced with t. So derivative 2x is equals to dt by dx. Now we can write x dx is equals to dt by 2. Is it clear? So further, this x dx can be replaced with dt by 2, whereas denominator will be t square minus 1. Now we can take 1 by 2 outside, and this 1 upon t square minus 1 can be written as t plus 1 into t minus 1 dt. Is it clear? Further, what we can do here is a upon t plus 1 plus b upon t minus 1 like this. Is it clear? And further, not dx, it is dt. And further, we can easily find the value of a and b, and we can integrate after that. After integration, in the final step, you have to put the value of t in terms of x.
सो ये अप्रोच सबसे इजी होगी, ऊपर वाली अप्रोच जो बोल रहे हो उससे भी बन जाएगा लेकिन बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके और किसी का कुछ डाउट है इस एक्सरसाइज से तो पूछ लो, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसको पूरा कंप्लीट करके एक सेल्फ इवैल्यूएशन आप लोग कर लेना, एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन टेस्ट लेके, ठीक है। खुद एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, एक दो तीन क्वेश्चन, और उसको एज ए टेस्ट कंसीडर करके सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल्स में जो अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एग्जांपल 3 का फर्स्ट पार्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एग्जांपल 3 का फर्स्ट पार्ट पेज नंबर 396, ठीक है, आ सकने वाला क्वेश्चन है ये वाला। और अदर देन दिस पेज नंबर 393, एग्जांपल 3 का फर्स्ट पार्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक बार 2 स्टेप 3 स्टेप देख लो अभी बुक में, अभी देख लो और बताओ मेरे को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। पहला ही स्टेप देखो क्या किया है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ये चीजें हमको कैसे समझ में आएंगी कि एक्स स्क्वायर को टी लेना है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 4 दिख रहा है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर को अगर टी लेंगे तो एक्स की पावर 4 जो है वो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा, समझ रहे हो। और न्यूमरेटर में जो स्टेप किया वो समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्स क्यूब को सीधा टी डी टी अपॉन 2 लिखा है। ये हिंट करूं इधर पे, एक बार तुम लोग देखो सब और बताओ एक्स। हाँ मैं जान रहा था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, तो इसलिए एक बार बोलो तो बता देता हूँ। एक्चुअली थोड़ा बुक में क्या डायरेक्टली कर देता है इसलिए समझ में आता नहीं है, इसलिए इधर देख लो एक दो स्टेप का एक्सप्लेनेशन। So which question number is this? एग्जाम्पल 3 फर्स्ट पार्ट पेज नंबर 393। नैना तुमको भी मिल गया ना क्वेश्चन? Yes, sir. सो देखो फर्स्ट स्टेप जो होगा यहाँ पर का क्या होगा समझना। पहले ये जो एक्स क्यूब है ना इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स डी एक्स। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? क्या किया हमने? नाउ वी विल पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। Now we will differentiate. So 2x is equals to dt by dx. Is it clear? So further x dx will be equals to dt by 2. Is it clear? यहां तक का स्टेप क्लियर है? और इसके बाद ये जो पूरा स्टेप हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस हो जाएगा, टी से। तो टी अपॉन यहां पर ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, और ये एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन 2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर? Now we can take 1 by 2 outside. So t upon t square plus 3t plus 2 और ये dt। तो ये स्टेप उसने डायरेक्टली किया, आप लोग देख लो बुक में एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में ऐसा है। ये कैसे आया समझ में आ गया? इसके बाद का प्रोसेस तो हो जाएगा आराम से। डिनोमिनेटर को आपको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, t प्लस 1 t प्लस 2 बनेंगे, फिर उसके बाद लगाना है पार्शियल फ्रैक्शन, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, बस ये स्टार्टिंग का हिंट आपको समझ में आना चाहिए, वो लॉजिक क्लियर होना चाहिए, उसके लिए क्वेश्चंस देख लो अच्छे से। ओके आगे मूव करें नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आई थिंक। Sir, I have one doubt. यस आस्क। Sir, can you please move to previous slide? That 4x square minus 9 question. So before that. यस Yes, sir. So like here degrees are same in numerator and denominator. So if we divide it, so our answer will be possible. यस डेफिनेटली दैट। So like I'm getting 1 plus 9 minus 3x square upon 4x square minus 9. Look, kindly check your division process. You are dividing x square with 4x square minus 9, okay? So the Yes, sir. first term of quotient will be 1 upon 4. Yeah, yes, sir. I've taken 1 here. It will be 1 upon 4, then only we will get x square here, then only we can simplify, okay?
So once can you please show this division method? Okay. Look, when we start with division of this term with this term, the first step of division or the first term of quotient, how we can find? For that, we have to divide the first term of dividend by the first term of divisor in our rough work. So here x square will be divided by 4x square. So this x square and x square will get cancelled out and you will get 1 upon 4. So this 1 upon 4 will be our first term of quotient. Is it clear? Yes, sir. Now we multiply this 1 upon 4 with all the terms of this divisor. So when this 1 upon 4 will multiplied with this term, you will get x square here. And when it is multiplied with minus 9, you will get minus 9 upon 4 here. Okay. Yes, sir. Now, here it will be negative, it will be positive. You can cancel this and the remainder will be 9 by 4. So further, this x square upon 4x square minus 9 can be written as, this is our quotient. So quotient, first we write remainder. So this is our remainder. So remainder is 9 upon 4 plus quotient, that is 1 upon 4 upon divisor, that is 4x square minus 9. मैंने गलत लिख दिया? नहीं, अभी मैं गलत लिख रहा हूँ. सॉरी, अभी मैं गलत लिख रहा हूँ. क्वोशेंट 4 ना? हाँ 1/4 क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर 4x स्क्वायर माइनस 9 ये होगा. ठीक है. Yes, sir. So this is how we can get the integration of 1 upon 4 as x upon 4 and further integration of And this. so like after this 9 by 4 we'll be taking it out. So 1 upon 4x square minus 9 will be left. So here we can apply the direct formula. Yes, Okay. yes, we can apply the direct formula here. Yes, sir. हाँ, x स्क्वायर माइनस ए 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, क्लियर. आगे बढ़े. Okay. Now, to start with the next exercise, we need to know few formula which is given in page 399. So just check out these formula and identify the differences between all the four formulas. Page 399 in the top. So all of you, are you able to identify the differences? In the first two formula, we have 1 upon x square root over x square plus a square. And in the second one, it is 1 upon root over x square The minus. difference is with sign only. Yes, in the first two, the difference is only sign. And in the last two, it is same as the first two, just the integral part is in numerator now. Okay. And all these four formula are similar to the first two which we have seen in the previous exercise. Two special formula. In that we don't have that root part. Root over x square minus a square or root over x square plus a square. It was not there. Okay. तो ये जो टोटल 6 फॉर्मूले है ना, ये अच्छे से प्रैक्टिस करके रख लो. ओके. इसमें कुछ रिमार्क्स भी दिए हुए हैं, जिसमें स्पेशली वो रिमार्क्स देख लेना. सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है. अगर 1 अपॉन एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये ऐसा हो जाएगा. मतलब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तुम लोगों को. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 5 1 अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, अगर ये आ रहा है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा?
सेकेंड वन, और ये फॉर्मूला क्या है, log x। तो x की जगह पे आपके पास क्या आ रहा है, x+5, तो यहां पर क्या जाएगा, log x+5 प्लस रूट ओवर x² माइनस a², मतलब ये x+5 का होल स्क्वायर माइनस 2², ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया क्या, नहीं है? इंटीग्रेशन 1/√ओवर x² माइनस 2², बताओ फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूले को देखो ना पहले, कौन सा लगेगा, तभी तो बताओगे। फर्स्ट वाला। सेकंड लगेगा ना शायद, बीच में माइनस है, तो क्या होगा, ये लॉग, यही होगा फॉर्मूला। अब अगर मान लो यहां पर मैं x की जगह पे लिख दूं x -10 का होल स्क्वायर माइनस 2², तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा बताओ, लॉग x -10 रूट माइनस 2²। समझ गए ये, इज इट क्लियर? लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब कंडीशन, ध्यान से सुनो, कंडीशन अप्लाई, और कंडीशन कौन सी अप्लाई है, कि ये जो x है ना उसका कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए। समझ गए? अगर -1 है तो भी नहीं हो सकता, अगर 2 3 4 है तो भी नहीं हो सकता। ठीक है, तब कैसे होगा, अगर ये डाउट है कैसे होगा, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे, उसमें से कॉमन निकाल लेंगे। लाइक अगर 4x -10 है तो हम 4 कॉमन निकाल लेंगे उसमें से, और उसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। 4 कॉमन निकलेगा तो 10/4 हो जाएगा वो। इस टाइप का करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, जब आएगा क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो अब सीधे हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज कौन सी, 7.7। 7.7 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन dx/√ओवर 1 + 4x²। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, पहले देख के बताओ। फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है, √x² + a², यही है फॉर्मूला। इज इक्वल्स टू क्या आता है, log x √ओवर x² + a²। तो हमको इस फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में अरेंज करने के लिए जो सबसे पहला अप्रोच यूज होगा वो क्या है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे फर्स्ट अप्रोच होगा कि आप इसको लिखो 1/√ओवर 4 कॉमन निकाल लो। यहां पर 4 कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा, x², और यहां पर क्या बच जाएगा, 1/4। एक्चुअली मैंने 2 स्टेप एक साथ किया, 4 कॉमन तो निकाल दिया, साथ ही साथ अंदर की टर्म को रीअरेंज भी कर दिया, x² को पहले और 1/4 को बाद में। ये क्लियर सबको? जल्दी एक्नॉलेज करो ऑनलाइन वाले बच्चे, सो दैट मैं आगे मूव करूं। Yes, sir. हाँ। अब ये जो ये √4 है ना, वो रूट से बाहर निकलेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में, तो बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, 2। सो वी कैन राइट 1/2 आउटसाइड दिस, एंड इट विल बी 1/√ओवर this is x², and this 1/4 can be written as 1/2 whole square and dx. Now apply this formula and that will be your answer. That's it. Is this clear to all of you? Yes, sir. Understood. Okay. Now, how we can proceed with this second part? Taking 3 common. Yes. So we can take actually 9 common from this root, and that 9 will, when we come out of this under root, you will get 3. So we can directly write 1/3 here, and it will be √over x² minus 16/9 dx.
further we can write it as 1 upon root over x square minus 4 by 3 whole square, and further you can apply the second formula from this. So just make proper notes of formula whichever we are applying or learning with new exercises. So in the first one, the answer is 2x plus root of 1 plus 4x square. Yes. And so like we are getting it as 1 upon 2 log x plus x square plus 1 upon 2 whole square. Okay. So let's have a discussion on that. Okay. So here, for the first part, when we apply the formula, what we will get? We will get 1 upon 2 log x plus root over x square plus 1 upon 2 whole square. This is what we are getting from our result. But in formula it is different. हाँ बोलो नैना, Sir, this exercise has been deleted. ये डिलीटेड है? एक मिनट चेक करने दो मुझे. यस 7.7 डिलीटेड है, सही बोल रहे. जबरदस्ती टाइम वेस्ट हो गया, सॉरी, चेक नहीं किया मैंने. हाँ मैंने भी नोट करके रखा था लेकिन देखा नहीं अभी. ठीक है हटा दो, भूल जाओ जो भी पढ़ा अभी तक. ठीक है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो सुन लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये वाला टॉपिक डिलीटेड नहीं. पूरे इंटीग्रल में एक ही एक्सरसाइज डिलीटेड थी, 7.7 ओनली. ठीक है. ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब अप्लाई होता है? जब हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है u इंटू वी. ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ है, इंपॉर्टेंट है, सुनो. और मैं एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, शायद आप लोग बना लो. तो u इंटू वी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है. मान लेते हैं u हमारा फर्स्ट फंक्शन है, v हमारा सेकंड फंक्शन है. तो फॉर्मूला क्या होता है, बोल के याद करना पड़ेगा आपको. फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन. So the formula is first function integration of second minus complete integration differentiation of first into integration of second. ये फॉर्मूला है. ठीक है. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को आइडेंटिफाई करना. तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक रूल यूज होता है, और वो रूल का नाम है आई एल ए टी ई. ठीक है, तो आप लोगों के में ये दो तो रहेगा ही नहीं, आई और टी नहीं रहेगा. तो आप लोगों का जो रूल होगा वो चेंज हो जाएगा. आप लोगों का रूल क्या होगा? एल ए ई. एल स्टैंड्स फॉर लॉगैरिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, तो लॉगैरिथमिक फंक्शन तो हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि log x आ रहा है तो वो लॉगैरिथमिक फंक्शन. अलजेब्रिक फंक्शन में क्या हो सकता है? x प्लस 1 हो सकता है, या एक्स स्क्वायर हो सकता है, या एक्स क्यूब हो सकता है, या सिंपली 1 भी है तो वो भी अलजेब्रिक में काउंट होगा. एक्सपोनेंशियल में ई रेस टू पावर एक्स या ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर, इस तरह की सारी टर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन में काउंट होगी. ठीक है, तो इस ऑर्डर में जो पहले आएगा वो हमारा फर्स्ट फंक्शन काउंट होगा. हटा दो इसको, फिर मैं सीधे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं. सो एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन x e रेस टू पावर x dx. अब एल ए ई अप्रोच देखो, तो कौन पहले आ रहा है यहाँ पर? a अलजेब्रिक, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा. e ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा. तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया? सेकंड फंक्शन. ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है आप लोगों का? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. इज इट क्लियर?
further here x will remain same, integration of this will be e raised to power x minus integration, the derivative of this part will be 1, integration of e raised to power x will be e raised to power x as it is. Okay, now further integrate again, so again e raised to power x integral will be e raised to power x plus c will be added in last because we are applying this indefinite integral. That will be your answer. Is it clear to all of you? Now similarly integrate the second part of first question also. बनेगा या कोई प्रॉब्लम बताऊं? हाँ चैतन्य कहाँ पर है? ओके ठीक है। क्या किया? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power 2x dx माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन d by dx of x into integration of e raised to power 2x dx। यहां तक क्लियर? ये x as it is, e raised to power 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? E raised to the power x by 2. e raised to power 2x by 2। 2x by 2. यस, एक्चुअली x का जो कोफिशिएंट है ना वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, समझ में है? माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e raised to power 2x by 2 dx। क्लियर यहां तक? फर्दर x e raised to power 2x upon 2 माइनस 1 by 2 ऑलरेडी था, e raised to power 2x का होगा e raised to power 2x upon 2 प्लस c लास्ट में आएगा। दैट्स इट, हो गया? सर 4 आएगा क्या? यहां पर No, 4 sir. होता है, हटा दो ना। चलो नेक्स्ट पार्ट करो, क्वेश्चन 2 करो सॉल्व। अब ये पूरे क्वेश्चंस तुम लोगों को सॉल्व करने हैं बाय पार्ट्स के। इसको आज के आज कंप्लीट करो। जिन लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं किया, पार्शियल फ्रैक्शन भी कंप्लीट करो, ठीक है? कुछ क्वेश्चन इसमें से बताने हैं तो मुझे बता दो, मैं उनको हिंट कर देता हूँ। 6th का फर्स्ट बताना है क्या? 6 का फर्स्ट के पहले मेरे ख्याल से 3rd का सेकंड मैं बता देता हूँ। 3rd का सेकंड सुन लो। 3rd का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या निकालना है? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन log x dx, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसको? इंटीग्रेशन। इसमें तो एक ही फंक्शन है तो इसलिए हम 1 into log x लिख देंगे dx। क्या ये समझ में आया? अब हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? हाँ आजा चैतन्य अंदर। अब हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या होगा इसमें? Log x. क्यों? हाँ log x i l, यस, ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सो d by dx ऑफ log x, ठीक है, इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो सेकेंड मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। क्लियर हुआ ये चीज? और यहां पर आ जाएगा dx, तो ये हो जाएगा x log x। क्लियर यहां तक? माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, और ये हो जाएगा dx। समझ में है? ये दोनों कट गया तो ये क्या बच गया? 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, तो x log x माइनस x प्लस c।
दैट्स इट। ये क्लियर है शैवी, नैना? Yes. Okay. One last question, just based on this topic. Uh, that is the first part of question 6. It is integral log x whole square dx. Look, first let me tell you one thing, that log x square and log x whole square, both of these are different functions. We cannot write this log x whole square in this form. Okay, so this is different. So how we can start with this function? Yes, we will write it as log x into log x. Now which function we can take first? Anyone we can take first function. So it will be first function integration of second minus complete integration differentiation of log x into integration of log x. Is it clear to all of you? Now this log x will be as it is. Now we had already calculated the integration of log x, and if we remove the c, we can write x under bracket log x minus 1. We can write like this also. Okay, so in the integration of log x is this. So here we can write the value of integration of log x. It will be x into log x minus 1. Okay, similarly here also the derivative of log x is 1 upon x and integration of log x is x under bracket log x minus 1. क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक बार एक्नॉलेज करो जल्दी ये वाला स्टेप। मैंने डायरेक्टली ये वाली वैल्यू पुट की है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स की जो वैल्यू है ना उसकी जगह पे ये पुट किया है, ठीक है। और उसके बाद फर्दर सॉल्व कर देना। यहाँ पर ये वाला पार्ट तो इंटीग्रेट हो ही गया था, यहाँ पर क्या था एक्स लॉग एक्स अंडर ब्रैकेट लॉग एक्स माइनस 1, और यहाँ पर ये एक्स एक्स कट जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन क्या बच गया आपके पास लॉग एक्स माइनस 1 dx। तो फिर से लॉग एक्स का इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन, नहीं है समझ? क्या डायरेक्ट दिया हुआ है? नहीं नहीं, उसके लिए ना आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला, ठीक है, या रफ में करके देख लेना पड़ेगा, ठीक है। तो शेविन है ना, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सो आप लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करो कंप्लीटली, और अगर पार्शियल फ्रैक्शन पेंडिंग है तो वो भी कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में मैं डाउट लूंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूंगा। पीडीएफ में ना उसमें सेव करते जा रहा हूँ, अगर चाहिए तो मैं बता देता हूँ रिया कहाँ पर है, उसको एक्सेस कर लेना। कल वाला मिल गया था? नहीं, मैं एक्चुअली क्या रीनेम नहीं कर पाता हूँ ना, तो इसलिए डेट वाइज सर्च कर लेना, ठीक है। और ये कहाँ पर सेव होगा, वहां पर ग्रुप में तो चले जाओगे, ग्रुप में जाने के बाद ना मैं रैंडमली यहीं पर कर दे रहा हूं, तो इसमें ना डेट वाइज चेक कर लेना आज की डेट का कौन सा है, ठीक है। ओके, सो एंड कर रहा हूं आज की क्लास। थैंक यू।